So let's wait for a few people to join. All right, just waiting for a few people to join this session, and then we will start our discussion. Okay, give me a moment. All right, I'm back. All right, many things happening around the globe, you know, apart from sports, and in some way or the other, way more important than sports. We all know what's happening, the tension that's building up between a few countries and how it might impact the other countries, including our own nation. Hello, Sukuna. There are countries. Already tension has been there between Russia, Ukraine, and then we have, Iran, Israel, and Palestine. And recently, another tension has been built up between Iran and Israel. So tough times for the globe. The globe is in grave danger, but hopefully, we might come out of it very soon. Let's just hope and pray for peace to prevail. We all know, like, if you try to apply some knowledge, some brain, we all know who's behind all this. You know, the greatest weapon manufacturer and the greatest weapon supplier. We all know which nation that is. And I'm not talking about the neighboring country. I mean, the neighboring country can never be the greatest weapon manufacturer or the greatest weapon supplier. It has to be, you know, which country I'm talking about. It is USA. Let me just be blunt and say it. Mm, well, I have shared a detailed prediction, Sukuna, so you can check that out. All right, go and find that out, and let me just confirm over here that while doing the calculation, there was a tie. All right, like when I was checking the compatibility of the parameters of the match day with the numbers of the two captains, both the captains were leading on three parameters each, so there was a tie. So it was actually tricky and tedious, but still, I found that it's actually Tom Latham who's having the advantage. So that's why I gave that prediction. So you can find that out, on my channel. You can find the details of that prediction on my channel. Yeah, I think there was a glitch. Yeah, so going back to the previous topic, there's a lot going on around the globe. So just give me a moment. Just give me a moment.
Alright, guys, I'm back. Yeah, I had to attend to someone at the door. Okay, so I told about the second test. Will he peak? Well, it's challenging times for Kohli. I've said that many a times because we are nearing 2025 and 2025 is expected to be really challenging for him. 2024 has given him one of the greatest gifts that a player can crave for, which is the T20 World Cup. But 2025 will be more challenging than this year. KP, I'll try. I'll try for that. Right? I cannot guarantee, but I will try because it takes quite a lot of time to do all the analysis and the study, and we have to be really careful. It's been a learning experience since the past few predictions, so I have to be really careful. So if I find the bandwidth, I'll surely try. I already said about Kohli. Alright, and we have another test match going on between South Africa and Bangladesh, and the prediction was shared earlier itself. Like I said, South Africa is the team which is having the edge over here. So, but still, the fight that Bangladesh has put up is truly commendable. And let's just openly admit that Bangladesh team performance hasn't been up to the mark since years, since decades, we can say. आती है मंजूत आती है, but you need to understand that there are people from south also, so and their Hindi is not that good, so for that reason I have to stick to a language which probably which the maximum people can understand. बट कई बार मैं हिंदी में भी वीडियोस डालता हूँ और हिंदी में भी एड्रेस करता हूँ. Uh, Sumit Bajaj will play great from. See, I mean, see, there might be astrologers with different opinions. We are not here to challenge each other. We are not here to, point out and say that someone is wrong here or there. So, yeah, what I was saying was, Bangladesh hasn't been performing well since decades actually. So, if they perform and put up a show, we should truly appreciate them. Mohammad Rizwan has won. Please make a video that whether Pakistan's performance will. KP, I will surely make that video. And can you please let me know where are you from? I mean, it's just a simple question. Like, you can let me know where you are from. So it's good for Pakistan. It's good for Mohammad Rizwan if he has won so many domestic trophies. All right, Kiki. So you're from Bangalore. So it's truly good, uh, for Pakistan, for Mohammad Rizwan. And as far as my cricketing knowledge goes, if they have appointed such a captain, then surely the performance should be better in comparison to what it was with Babar Azam as the lead. So होपफुली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इम्प्रूव तो होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ख़राब बहुत ही लचर प्रदर्शन रहा है पाकिस्तान की टीम का. वो लोग अगर बांग्लादेश से अपने ही घर पे 2-0 से सीरीज़ हार रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत ही लचर प्रदर्शन है. ऑलराइट, आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस केपी बट इट माइट बी ट्रू. हो सकता है कि वो T20 और ODI के कैप्टन घोषित किए जा चुके हैं. हो सकता है ये सच हो बट आई हैवंट रेड अबाउट इट एनीवेयर एज ऑफ नाउ. So you know we might have to check, and at least for the third test probably Shan Masood will remain the captain. And okay, anyway, you're talking about the T20 and the ODIs. So and as far as tests are concerned, I think it is an achievement for Shan Masood if he has
got Pakistan relieved from that losing streak. Generally, we talk about winning streak, but for Pakistan, it was the losing streak, and that too at home. We all remember how this team has been losing against Australia, England, and I mean they are losing at home, and that too in a clean sweep. They are losing 3-0. I mean they lost 2-0 against Bangladesh at their own backyard. I mean I hardly remember that any team has performed. And I mean a test playing nation has performed that bad. Maybe Bangladesh might have performed in that manner, but apart from Bangladesh, I don't think there hasn't been any test playing nation who has performed that bad. You're right, the KP, but looking at Pakistan's record, which is even worse than Bangladesh, we have to, give some credit to Shan Masood that finally he was successful in breaking the losing streak. All right, and we will have to find out what happens in the third test. I mean, both the teams are appearing to be really strong. It's 1-1 at the moment. So I think it will be a game to watch out for. It is going to be a cutthroat contest, the third test. And at the moment, well, Bangladesh are 3 wickets down. They are 80 for 3. They still trail by 122 runs. So South Africa still has a chance of winning this test by an inning. But looking at the way Joy and Raheem are playing, they might be able to, avoid an inning defeat. But still, you never know. The game is still on. Several players performed exceptionally well. Like if I look at the South African, you know, scorecard, uh, Verine I think scored 114, and even Mulder scored 54. I remember South Africa was in deep trouble when they were 99 for 5 probably, and even the sixth wicket fell quite early. They were 108 for 6, and from there, it could have been anyone's game, but Vereen and Mulder, they pulled out South Africa from the danger. Well, Rishabh, for South Africa to reach the finals, it's actually quite difficult because they have 6 matches remaining and they'll have to win um, at least five. At least five. Yes, we know that 4 out of the 6 will be in their homes, will be in their own home conditions, but you know, in order to make the chances better to reach the WTC final, they should make sure that they win all 6 remaining and they do not lose any points due to penalty, or slow over rate. And then they will also have to rely on the results of the matches of the other teams. No, no, Rishabh, the thing is that they need to rely on the result of the matches of the other teams. All right. Even if they win all 6, like India's win percentage, it's too high. It's probably more than 70. And if Australia is able to win the series against India, both India and Australia will have a win percent of more than 60. All right. So, if Australia defeats India 5-0, okay, uh, and South Africa wins all their 6 matches, in that case only South Africa will be able to reach. And there's also one more condition that they should not lose any points due to penalty. वो लोग स्लो ओवर रेट की वजह से कोई पॉइंट गंवाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. क्या कहना चाह रहे हो योगेश जी?
योगेश राठी, आप कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा, 1 मिनट। ऑलराइट, सो आई थिंक नाउ you got the answer, Yogesh, if you are still watching. तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अम, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 5-0 से हराए। दूसरी ज़रूरत ये है कि साउथ अफ्रीका अपने सभी 6 मैचेस जीते और पेनल्टी में कोई पॉइंट्स गंवाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी साउथ अफ्रीकन टीम कि स्लो ओवर रेट की वजह से कोई पॉइंट्स लूज़ हो जाएं, तो वो भी टीम को हार्मफुली इम्पैक्ट कर सकते हैं। It is difficult, Rishabh, because we have, you know, a lot of youngsters who are coming up. So, for him to captain at the age of 40 plus, it might be quite difficult because his form might deteriorate due to, you know, age factor. It truly comes into play. We cannot deny. So, will he remain the captain? Because if his performance deteriorates, then questions might be raised on his position in the team. So people, the critics will start making noise and they will start shouting that he should be sacked. Just give me a moment. Just bear with me, guys. Alright, guys, this will be better. Yeah, there was a lot of disturbance, so I just came back. So as I mentioned, Rishabh, it is difficult for Rohit to lead. You know, in the 50 World Cup, yeah, even if he plays, I think that will be a great achievement. Even if he continues to play, that itself will be a great achievement. If he plays, if he manages to play somehow till the 2027 Cricket World Cup. Just a moment. So I hope that answers your question, Rishabh. And Bangladesh is truly putting up a great fight. I mean, they have crossed 100. The current score is 101 for 3. And, you know, probably they are just another 101 runs behind. So it's a great fight. They can avoid an inning defeat, and if they manage to get quite a handsome lead, probably we might have a match at hand. Oh, that's a really impressive question, Priyanshu, because people are generally not bothered about women's cricket, and amidst such a high performance cricket, if you're asking a question related to women's cricket, that's truly impressive. क्योंकि लोगों को हार्डली कोई लेना देना, और ये भी मैं मानता हूँ कि अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं रह रहा है हमारी महिला क्रिकेटरों का। और जब इक्वल पे की बात आती है तब तो बहुत शोर मचाया जाता है, लेकिन जब प्रदर्शन की बात आती है तो इतना लचर प्रदर्शन रहता है कि हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते। तो प्रियांशु, जहाँ तक आपके सवाल का सवाल है, मैं तो मुझे चेक करना पड़ेगा।
कि किसके numbers better है, but yes, definitely we need someone, you know, with a better temperament. क्योंकि एक, आई मीन, जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर, लेकिन एक कैप्टन के अंदर टेम्परमेंट चाहिए, जैसे कि इवन विराट कोहली भी बहुत अग्रेसिव कैप्टन थे, बट वो एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। जबकि रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो उनका टेम्परमेंट थोड़ा बेटर है। तो इसलिए हम खुद ही, आप खुद ही देखिए कि WTC के फाइनल में वो लेके गए इंडिया को, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में, और T20 वर्ल्ड कप तो जितवा दिया उन्होंने अपनी कप्तानी में। तो ऐसा माइंडसेट, ऐसा टेम्परामेंट चाहिए होता है कैप्टन के अंदर। सो प्रॉब्ली हरमनप्रीत इज़ नॉट सूटेबल, और डेफिनेटली वी शुड बी चेंजिंग द कैप्टन। एक नए कैप्टन की सख्त ज़रूरत है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को। And it's a great question. I think this should be the best question, that has been asked in all my live sessions. वुमेन्स वर्ल्ड कप ख़त्म भी हो चुका है, बट उसके बाद भी अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, दैट मीन्स यू आर बॉदर्ड, यू नो about women's cricket, and that is the need of the hour for our country. Like, we need to focus on other sports, we need to focus on women in sports. Once we start doing that, you know we will very soon see that our nation will become a superpower in sports, if we start focusing on the other sports, and if we start focusing on women in sports. Because if you look at the performance, जितने भी देश हैं, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उनके उस बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो सैकड़ों मेडल्स जीत पाते हैं। जहाँ हम लोग एक मेडल को तरस जाते हैं, वहाँ वो लोग सैकड़ों मेडल जीत पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी आगे आएँ, और दर्शक जो हैं, ऑडियंसेस जो हैं, हम लोग जो हैं, हम सभी, मैं भी, आप भी, हम सब इन्हें भी तवज्जो दें, इन्हें भी वैल्यू दें, इन्हें भी इम्पोर्टेंस दें, इन्हें भी अहमियत दें। ये बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले तो ज़रूरी है कि दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट डेवलप हो। इनफैक्ट ओलंपिक्स में भी खैर मैंने देखा था कि इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, बट बहुत ही कम। मतलब जो लोग इंटरेस्टेड थे उनके लिए तो बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, बट जितने लोग इंटरेस्टेड थे ना, वो संख्या बहुत कम थी। जैसे जब कोई क्रिकेटिंग इवेंट चल रहा होता है, तो अगर मैं अपने ही कॉम्प्लेक्स, अपनी ही कॉलोनी की बात करूँ, हर घर के हर शख्स को पता होता है उस क्रिकेटिंग इवेंट के बारे में। लेकिन ओलंपिक्स जैसा मेजर इवेंट चल रहा था, और इतने बड़े मेरे कॉम्प्लेक्स में हार्डली कुछ लोग होंगे जो जिन्हें परवाह थी, जो देख भी रहे थे ओलंपिक्स। बहुत कम लोग। और वो आपको दिखता है, नज़र आता है। आप एक तरफ हमारी ह्यूज, जाइंट क्रिकेट टीम है, जो कि इतना उम्दा प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी तरफ ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन देखिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है हमारा, लेकिन 71st 71st पोजीशन ओलंपिक्स में, 71st। शेम, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, एंड लेट्स बी ब्लंट अबाउट इट, इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश ओलंपिक्स में 71st, और जो सेकंड नंबर पर है चाइना, आई थिंक चाइना वॉज सेकंड। कहाँ सेकंड, कहाँ 71st? Is it? Like, I hope that's not cricket, and I hope that's not kabaddi, because cricket and kabaddi are two such sports which kind of guarantee a medal for India, at least in Commonwealth. At least in Commonwealth, we get assured of a medal due to sports like cricket and kabaddi. So I think you know
Major events are about to start from day after tomorrow. We have India versus New Zealand. We have Pakistan versus England, and soon, I mean, there was another topic which was garnering a lot of interest from the viewers that was related to the Champions Trophy, whether India should travel or not. And a lot has been going on because India, I mean, as per the news, the chances are extremely rare that India will travel to Pakistan. Chances are really rare, and there are chances that with Jay Shah becoming the chairman, जय शाह जो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, तो अब तो यहाँ तक चांसेस क्रिएट हो चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। হতে পারে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটাও পাকিস্তানি খেলা হবে না, মানে বাইরে খেলা হবে। তাহলে সেটা দেখতে হবে যে কোন नेशने হবে। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हमारी सब लोगों की नज़र बनी हुई से हो सके कि पाकिस्तान में खेलो कोनी होवे वो। ऐसे में किस देश में होता है वो भी एक सवाल है, और हो सकता है कि हाइब्रिड मोड में हो, यानी कि सिर्फ इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना हो और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में ही हों। और ऐसे में अगर इंडिया का सेमीफाइनल मैच और इंडिया फाइनल में पहुंच जाए तो इंडिया का फाइनल मैच वो भी ऐसी सिचुएशन में तो बाहर ही होगा, पाकिस्तान में तो होगा नहीं अगर हाइब्रिड मोड के लिए सारे बोर्ड्स अग्री कर जाते हैं। एक्चुअली देखिए, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में डिफरेंस ये है कि एशिया कप में जिन कंट्रीज़ को मनाना था हमें हाइब्रिड मोड के लिए, तो वो कौन थे? वो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हें मनाना कोई इतनी टेढ़ी खीर नहीं है। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसे देश हैं जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें कन्विंस करना कि आप हाइब्रिड मोड में खेलो और सिर्फ इंडिया के मैचेस के लिए आप पाकिस्तान से बाहर जाओ, फिर वापस पाकिस्तान में आओ अपने बाकी मैचेस खेलने के लिए, तो वो थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है। समझ रहे होगे आप मेरी बात को कि देखिए, एशिया कप में इन देशों को मनाना इतना मुश्किल नहीं था। एशिया कप में इंडिया ने जो फैसला ले लिया वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, इन इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों को कन्विंस करना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन देशों को कन्विंस करना कि आप इंडिया के मैचेस के लिए दूसरे कंट्री में जाओ फिर वापस पाकिस्तान आओ बाकी मैचेस के लिए, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग से रिलेटेड कॉन्स्टेंट हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्स्टेंट हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली होस्ट कर जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान ने हाल फिलहाल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इन देशों को सक्सेसफुली होस्ट किया है, तो ऐसे में चांसेस पाकिस्तान के इंक्रीज हो जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। मनजोत सिंह, आई ट्रूली अंडरस्टैंड द सरकाज़म बिहाइंड योर स्टेटमेंट। आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं मनजोत जी, बट एनीवे आप सब व्यूअर्स हैं और आपका पूरा हक बनता है एंजॉय करने का। और एक इसे हम एक ह्यूमरस वे में भी ले सकते हैं। Yes, Priyanshu, yeah, that's what it means. So, both the teams are leading on three parameters each. Both the captains are leading on three parameters each. So it was a tedious task, but you know, and let me tell you that when I said that the my predictions have been 100% correct for test matches, what I meant was, you know, this process has been 100%. Like I was actually talking about the process, not my predictions. The process where I check the compatibility of the parameters of the match day with the numbers of the two captains, and there is no tie
in those scenarios, the predictions have been 100% correct. Speaking of the first test, I have done the study, and I have probably found out where the mistake was. So I will try to implement that in my future predictions. India, what do you think is India going to win? Mm, well, let's keep the fingers crossed. I will be extremely happy if my prediction fails. I will be extremely happy if in the second test my prediction fails. So let's keep our fingers crossed and let's hope and pray that India wins. तो इंडिया के लिए इतना भी मुश्किल नहीं है ऋषभ अभी देखिए 3 टेस्ट जीतने हैं इंडिया को 60 टेस्ट मैचेस बचे हैं अगर बाकी बचे 2 जीत जाती है आई मीन अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है और फिर थर्ड टेस्ट भी इंडिया जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 टेस्ट जीतना होगा और जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया का रहा है डाउन अंडर बीजीटी में पिछले 2 बीजीटी में 5 में से 1 टेस्ट में इंडिया ना जीते ये थोड़ा मुश्किल है मतलब एटलीस्ट एक तो इंडिया को जीतना चाहिए देखिए डाउन अंडर में जब इंडिया जाएगी और ऑस्ट्रेलियन टीम ये हमेशा इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस शो करती है बीजीटी जब भी ऑस्ट्रेलिया में हो जाए कि हम 5-0 से हरा देंगे कभी 4-0 से हरा देंगे और हमेशा उन्हें मुंह की खानी पड़ती है तो इतनी कोई चिंताजनक बात नहीं है कोई टेंशन की इतनी बात नहीं है क्योंकि 2 बार बीजीटी पे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीत रही है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जिस टीम ने बीजीटी जीता पिछले दोनों बार उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी भी हैं हमारी टीम में तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है कि हाँ हम बीजीटी इस बार भी जीत सकते हैं और अगर नहीं भी जीते तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 1 टेस्ट तो इंडिया को जीत जाना चाहिए ताकि इंडिया अपनी जगह सिक्योर कर ले डब्ल्यूटीसी फाइनल में और इनफैक्ट इंडिया का प्रदर्शन अभी तक इतना बेहतरीन रहा है तो मुझे लगता है कि अगर नहीं भी इंडिया जीतती है तो बाकी टीमें भी अगर खराब परफॉर्म कर गई जैसे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसी टीम्स अगर खराब परफॉर्म कर गई तो भी इंडिया का चांस बना रहेगा धीरे धीरे श्रीलंका भी थोड़ी अच्छी श्रीलंकन टीम एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग बन रही है जिस तरह के स्पिनर्स उनके पास आ गए हैं और जिस तरह से उन्होंने वनडे सीरीज में इंडिया को हराया 2-0 और फर्स्ट मैच टाई किया आई थिंक इट वाज ट्रूली रिमार्केबल और बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन था और सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि एक खतरनाक टीम बनकर उभर रही है श्रीलंकन टीम जिस तरह से वो लोग स्पेशली श्रीलंकन बॉलिंग जिस तरह वो पूरी तरह धराशायी कर देते हैं अपोजिशन की बैटिंग को तो ये बहुत ही रिमार्केबल है yes that is right Priyanshu toss will play a really crucial role toss will be extremely crucial and yes whoever wins the toss would want to bat first so let's hope Rohit wins it and bats first or even if Tom wins it let's hope he chooses to bowl first वेल देखिए कोच आप किसी को भी अपॉइंट करो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं हाँ अगर कोच का रोल टीम सिलेक्शन में भी है और अगर इन प्लेयर्स को जयसूर्या चांस दे रहे हैं तो उनको क्रेडिट बनता है तो ये तो खैर कोई नहीं बता सकता कि जयसूर्या इन प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं या नहीं तो अगर वो दे रहे हैं तो क्रेडिट उनका भी बनता है और बहुत ही काम और कूल और कंपोज्ड माइंडसेट है जयसूर्या का जो कि T20 मुझे याद है T20 सीरीज में जब श्रीलंकन टीम हार रही थी तो लोगों को जयसूर्या पे गुस्सा आ रहा था कि यार इस टीम को तो बेल्ट से मारा जाना चाहिए और ये इतना कूल एंड काम क्यों है तो वो बाद में हमें ओडीआई सीरीज में दिख गया कि उनके कूल एंड काम रहने का जो फ़ायदा मिला पूरी टीम को जिस तरह का कमबैक किया श्रीलंकन टीम ने अगेंस्ट इंडिया इन दी ओडीआई सीरीज especially the bowlers was not just astonishing but also commendable तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं अभी
और यहाँ पर दूसरे दिन का खेल भी समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश की टीम 101 पर 3 है। वो लोग अभी भी 101 रन पीछे हैं। तो यहाँ पर इट कुड बी एनीवन्स गेम अगर क्रिकेटिंग नॉलेज की बात की जाए। ऑल थ्री रिजल्ट, नॉट ऑल थ्री, two results are possible. I don't think it's going to be a draw, क्योंकि सेकेंड डे में ही अगर हम लोग सेकेंड इनिंग्स में आ चुके हैं, जनरली अगर थर्ड डे में सेकेंड इनिंग्स में आप आ जाते हो तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि मैच का कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आएगा। और यहाँ तो सेकेंड डे में ही सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ड्रॉ तो होना नहीं चाहिए। बांग्लादेश के चांसेस बहुत ही कम है जीतने के। साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत हाई हैं और मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत रही है, जो मैंने न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया था। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट का। इसके साथ ही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक वक्त पे तो लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सब सब यही कह रहे थे कि जो टीम बांग्लादेश से हार चुकी है 2-0, उसको तो इंग्लैंड यूं ही पटक देगी। बट सेकेंड मैच में कुछ चेंजेस किए गए पाकिस्तान की टीम में और कुछ बेहतरीन स्पिनर्स को लाया गया और नतीजा हम सबके सामने है। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है ये जो सीरीज़ है। अभी देखिए, अभी जिन टीमों के चांसेस हैं, अभी कोई भी टीम कंफर्म नहीं हुई है और ये बहुत शॉकिंग होगा, बहुत ही हिलेरियस होगा अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों क्वालिफाई ना करें। ये बहुत ही शॉकिंग होगा। और मान लीजिए श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका हो जाए फाइनल, बट ऐसा मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि डाउन अंडर में कोई एक टीम तो कैसा एडवांटेज हासिल कर लेगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से एक टीम तो पक्की हो ही जाएगी। इंग्लैंड इज गोइंग। आपने कहा इंग्लैंड इज गोइंग टू विन फर्स्ट टेस्ट। आर यू टॉकिंग अबाउट द थर्ड टेस्ट ऋषभ? आई एम नॉट श्योर। Maybe there was some mistake. You should actually write the third test. फर्स्ट टेस्ट तो ऑलरेडी इंग्लैंड ही जीत ही चुकी है, फिर पाकिस्तान कम बैक भी कर चुकी है सेकेंड टेस्ट में। और लास्ट टेस्ट, ओके, लास्ट। You tried to write it in short form. I have to check that, Rishabh. I haven't done the numerological analysis as of now for the third test. Yes. Uh, no, Priyanshu, see, if South Africa wins 5 out of 6, that will not guarantee them a spot in the WTC final. Yeah, even if they win 6 out of 6, even then, theoretically and mathematically, their spot won't be fixed. अगर वो 6 के 6 भी जीत गई ना, तो भी कंफर्म नहीं होगा उनका WTC फाइनल खेलना। बात को समझिए आप, क्योंकि तो भी उन्हें दूसरे रिजल्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा। हाँ, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर 6 के 6 साउथ अफ्रीका जीत जाती है, तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे WTC फाइनल खेलने के। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। अभी मैक्सिमम चांस यही है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही फिर से होने वाला है WTC फाइनल में। बीजीटी एक बहुत ही क्रूशल मोड होगा इस साइकिल के लिए, इस WTC के इस साइकिल के लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच, यू नो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। तो आप सभी बने रहिए चैनल के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हो चैनल को। और बहुत ही ज़रूरी बात, आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे हर वीडियो। क्योंकि आप लोग कहते रहते हो कि इस टॉपिक का वीडियो नहीं है, उस टॉपिक का वीडियो नहीं है, कभी आप किसी का फ्यूचर पूछते हो, किसी और का फ्यूचर पूछते हो, जबकि ऑलरेडी मैं उस टॉपिक पे या उस खिलाड़ी के फ्यूचर पे वीडियो बना चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो आप और
आप कई बार कहते हो कि लाइव कब जाता हूँ पता नहीं चलता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊँगा आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। Yes, Siddharth, I'm doing good. How are you? And where are you from, Siddharth? I'm doing really good. Thank you so much for asking. I am actually doing that. I have already predicted the outcome of India versus Australia BGT. You can find those videos, and that's why I'm telling subscribe to the channel and press the bell icon so that you do not miss any notification. So yeah, I have already predicted the outcome of BGT, considering Rohit as the captain and Shubman Gill as the captain. Now people are saying that Rohit might miss the first few test matches. Jasprit Bumrah might replace him. So that is another scenario which I will have to check. And all that India needs to do is, to win the remaining two matches against New Zealand and win at least one in BGT. That will guarantee a spot in the WTC final. तो ये था एक और क्विक लाइव। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा कि लोग जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन हो रहा है और एक डिस्कशन हो रहा है, और इसीलिए ये चैनल है। तो जैसा मैंने कहा कि और आप चाहते हो कि चैनल ग्रो करता रहे, क्योंकि ये एक फैमिली है। ये जस्ट मेरा अकेले का चैनल मैं इसे नहीं कहना चाहूँगा। येस, इट इज़ माय बेबी, बट ये एक फैमिली है। तो आप सब अगर चाहते हो चैनल ग्रो करे तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को, क्योंकि दैट हेल्प्स मी टन, एज फार एज दी YouTube algorithm is concerned. And do subscribe, do share, and do press the bell icon. Yes, thank you so much, Srijan. It's truly great to hear that. Thank you for your words. तो यहाँ पर आई थिंक वी कैन वाइंड अप। आप सब जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही एक और लाइव में और एक और वीडियो में आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए, और आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जय श्री राम।